Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Hello, everyone. I hope I am audible and yes, I'm properly audible and properly visible. Okay, so good morning and welcome to another edition of the Hindu Analysis. Right. So कल की बात कर लेते हैं कल की मीडिया में सोशल मीडिया में क्या चलता रहा. So news channels were typically doing the same thing, है ना, like spreading false propagandas. राइट, दुबई से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स अलाउ कर दिए हैं, ये वो ऐसा वैसा दिस दैट वगैरह वगैरह. हेलो फराज. सो अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ वर देयर इन द सोशल मीडिया यस्टरडे, है ना. कुछ लोगों का मानना था कि द न्यू लीडर ऑफ ईरान, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुस्तफा खमैनी, ही इज इन कोमा बिकॉज ही इज इंजर्ड. एंड कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई. Then एक news आई that the Donald Trump has ordered an SIR kind of activity, right, for America. So the people also started talking about कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए ट्रम्प जो है वो SIR कराना चाहता है. दैट्स अ करेक्ट न्यूज़, हाँ. कि वहां पे एक वोटर रिवीजन जो है उसको order किया गया है. They are planning it, and according to Trump, the war has been won, by like the first hour, but still there is a talk for ceasefire. I don't know how the war is won without ceasefire, like without with a ceasefire. जब आप ceasefire की बात कर रहे हो तो war कैसे जीता है, right? And second most important news जो अभी चली रही है, that is Western Asian conflict. And conflict में अब थोड़ा सा चीजें चेंज हो रही हैं, है ना. चीजें इसलिए चेंज हो रही हैं बिकॉज अभी के टाइम पे फॉर नाउ वी नो दिस पर्टिकुलर वन थिंग, दैट अमेरिकन्स आर प्लेइंग एट द बैक फुट, राइट, एंड इरानियंस आर प्लेइंग एट द फ्रंट फुट. उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी इंडिविजुअल शिप टू पास फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड रशिया, एंड दे आर स्टिक टू इट. आईएसएस जो वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो हटा लिया गया है. There is a refueling plane that is being shot down in the Iraq, right? And news which is negative to US. For example, another confirmed news was there that the American soldiers who are injured in this particular conflict, they have been silently shipped to Germany for the hospital for the medical care. The public opinion also is against the Trump in the US. So यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है कि जो यूएस है, स्पेशली यूएस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इसराइल. इसराइल का भी अपन कुछ नहीं कर सकते, बट यूएस जो है वो बैकफुट पे खेल रहा है. ईरान ऑन द अदर हाफ, भाई साहब, ये आगे बढ़ बढ़ के चक्के मारने की कोशिश कर रहा है. Strictly is like on the fire mode. They are strictly saying कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज. वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग जब तक हमारी कंडीशंस नहीं मानी जाएगी. वी हैव टोल्ड यू अबाउट लाइक द कंडीशन यस्टरडे कि सबसे पहले तो वॉर बंद करो, फिर जो वॉर रिप्रेशन है उसको तुम पे ऑफ करो. थर्ड थिंग यू डू, लीव द वेस्टर्न एशियन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एट ऑल. तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब कुछ उन्होंने बात रखी हुई है. एंड ये वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के क्या मोड़ लेता है इस पे अपन बात करेंगे. बट इसके कारण जो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा अब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. एंड ईरान इसी पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से इकोनॉमिक चोक के बेसिस पे अब मसल पावर लाइक अमेरिका एंड इसराइल उनको क्या करके रखा हुआ, दबा के रखे हुए. तो अपन इस पे बात करेंगे क्या सीन है क्या नहीं है. वेरी गुड फराज. डेफिनेटली, डेफिनेटली तुम देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. अनदर न्यूज फ्रॉम दिस, अब न्यूज़पेपर पे वापस आ जाते हैं सोशल मीडिया के अलावा. तो न्यूज़पेपर से सबसे इम्पोर्टेंट पहली न्यूज इज दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, है ना. यस, इंडिया ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है उसको रिलीज किया है. यू कैन सी दिस इज द फ्रंट पेज न्यूज. Center sits in eight, like 57,381 crore to aid the global, what we can say, handmaids. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड जो है उसकी बात की है. सो हम एक एक करके आज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया. हम जो सारी न्यूज है जो छोटी छोटी है हम उसको साथ में डिस्कस करते रहेंगे, एंड देन उसके बाद जो मेजर न्यूज है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे.
सो इकोनॉमिक न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड की बात करूँ, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ set some 57,381 crore rupees for the Economic Stabilization Fund to deal with the global economic shock. So this is the very first time when the Indian government, the officially Indian government has recognized that there is a global economic shock, and because of that, the Indian economy is also suffering. मैं कल की न्यूज बता देता हूँ, राइट। सो जो सेंसेक्स था अप्रोक्सीमेट 1400 पॉइंट डाउन रहा, निफ्टी जो है अप्रोक्सीमेट 400 पॉइंट डाउन रहा। दैट क्लियरली मींस वी हैव लॉस्ट अप्रोक्सीमेट 9.5 लाख करोड़ in terms of investment that we did in that market. तो क्या इकोनॉमिक शॉक है? इंडिया ने इकोनॉमिकली इस पर्टिकुलर चीज को अब जाकर रिकॉग्नाइज किया है, विच इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। क्योंकि इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम यही चल रही है कि आप जो है वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो, तो आप सोल्यूशन कैसे दोगे? तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ये चीज हुई है। एंड जो की पॉइंट है इस अनाउंसमेंट के, हम उसकी कुछ बात कर लेते हैं कि क्या बोला हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, राइट। सो ये सबसे पहले तो लोकसभा में अनाउंस किया गया, राइट। उन्होंने इसको सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स बोला है। क्या बोला है? सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स बोला है, फॉर द इकोनॉमिक शॉक दैट आवर इकोनॉमी इज फेसिंग, राइट। तो ये जो है जो आपको कुछ 58,000 के आसपास करोड़ का फंड है, इसको उन्होंने सेकेंडरी सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट बोली है, एंड टू हैंडल द इकोनॉमिक शॉक, राइट। जो टोटल एक्सपेंडिचर अप्रूव हुआ है दैट इज क्लोज टू 2.1 लाख करोड़, 2.01 लाख करोड़। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 57,381 करोड़ है। सो टोटल जो ग्रांट उन्होंने अप्रूव की, जो टोटल एक्सपेंडिचर अप्रूव किया है दैट इज 2.01 लाख करोड़। और उसके अलावा उन्होंने जो फिजिकल डेफिसिट है, गवर्नमेंट इज स्टिल एमिंग टू मेंटेन द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो वो अपने लेवल पे ये पर्टिकुलर चीज कर रही हैं कि इकोनॉमिक शॉक जो है वो इकोनॉमी को ज्यादा डैमेज ना करे, राइट। उन्होंने जो सप्लीमेंट्री फंड है, जो ग्रांट्स है, उसको रिलीज करना शुरू किया है। एंड दे हैव मेंशन्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको, या द लाइक रिस्पॉन्ड एरियाज जो है उनको मेंशन किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने ग्लोबल वॉलेटिलिटी को वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, एड्रेस किया है कि देयर इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये उससे लड़ने के काम आएगा। उन्होंने सप्लाई चेन डिस्रप्शन जो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, now when we are saying supply chain disruption on this, we are strictly talking about the petroleum, the LPG, the LNG, the CNG वाला thing, है ना। सो सप्लाई चेन डिस्रप्शन को हैंडल करने के लिए फिर एनर्जी प्राइस जो है, राइट, उसका जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, यस, फ्रॉम द लास्ट नोन न्यूज जो हमने मतलब जो मैं यहाँ आने के पहले मैंने देखा था, द क्रूड ऑयल वाज $100 पर बैरल, राइट। तो ये एक एनर्जी फ्लक्चुएशन जो ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहा है, उससे लड़ाई करने के लिए है। एंड द डॉलर रूपी वैल्यू रीचेस टू 9.3 एट द क्लोजिंग, हाईएस्ट इट वाज 9.92.42। So this is the lowest the rupee goes up to this particular, like up to like in the history you can say, right? And the next one was जो sectoral crisis देखने को मिल रहा है। When she is addressing the sectoral crisis, she is talking about the byproduct industries of petroleum. हमने परसों के नसों की में एक पर्टिकुलर बात की थी, किस तरीके से एक छोटा सा पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट जो नहीं मिल पा रहा है, वो किस तरीके से पूरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्या करता है, हैम्पर करता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमने सल्फर के एग्जांपल लिया था कि सल्फर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। सल्फर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है एंड ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में काम आता है। सो फॉर एग्जांपल मान लो कॉपर का एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, तो कॉपर की अगर कमी हुई तो दैट मीन्स कि ईवीज में प्रॉब्लम होगी, एसीज में प्रॉब्लम होगी, सिलिकॉन चिप्स एंड उनकी कम्युनिकेशन उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, एंड देयर आर गोइंग टू बी टन्स ऑफ डिफरेंट। तो एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज व्हाई शी इज एड्रेसिंग कि द सेक्टोरल क्राइसिस जो है ना, सेक्टोरल इकोनॉमिकल क्राइसिस जो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे भी लड़ने के लिए ये फंड रिलीज किया गया है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली लाइक रिकॉग्नाइज कि हाँ ये चीज है, ये प्रॉब्लम हुई है।
Right. Look at the article that started at the $100 per barrel oil shock and fear of energy shortage supply, this supply chain disruption and the West Asian conflict. The center is allocated 57,381 crores for an economic stabilization fund that would provide its fiscal space to address the global headwinds. तो ये गवर्नमेंट ने पहली बार क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है. दिस इज समथिंग विच इज गुड. सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अच्छा, कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये चीज रिकॉग्नाइज कर दी है कि एलपीजी एंड अदर पर्टिकुलर जो गैसेस प्रोडक्ट है, जो एनर्जी है, उसको उसकी क्राइसिस है. Yes, in one of his rally, right, he clearly mentioned that we have faced worst problems like this. हमने कोविड के टाइम पे भी ऐसी प्रॉब्लम देखी है एंड हम उससे कम बाहर आ चुके हैं. एंड वी हैव सीन द क्राइसिस लाइक कोविड एंड वी आर आउट ऑफ इट. सो इफ वी आर सीइंग एन एनर्जी क्राइसिस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, वी विल गेट आउट ऑफ इट. सो अनऑफिशियली ही से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Modi ji, have accepted it. So are we going to do the for now, as we are going to discuss the Hindu only. But if you want the Indian Express भी discuss किया जाए, so let me know. Others as well, if you want the Indian Express भी discuss किया जाए, तो let me know. तो मैं दोनों पे discussion शुरू किया करूँ. अच्छा, एलपीजी क्राइसिस जो है उसको भी इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट है बिकॉज व्हेन यू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम यू कैन एक्चुअली मेक लाइक सॉल्व इट. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दी अदर न्यूज. अभी ये वाली जो न्यूज है फॉर लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए जो इंडिया ब्लॉक एमपीज हैं, दे हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, राइट, सबमिटेड अ नोटिस इन द पार्लियामेंट टू रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार. राइट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ गुड एडिटोरियल जिसके बेसिस पे आप एक अच्छा क्वेश्चन भी आप पैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. राइट. देन डब्ल्यूएचओ के जो पेंडेमिक एग्रीमेंट होते हैं वो न्यूज में था. डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट, राइट. सो इट has supported the coalition of demanding what we can say fair benefit sharing in the pandemic agreement negotiation. That is the major news, right? So vaccination ka fair access, medication ka fair access, this is something which is the point of discussion. So vaccines are there, medications are there, right? The benefit of sharing the generic data and the pathogens, right? The labs, the accessibility of what we can say research data. There are tons of different things जो है. अब मैं इसको ओवरऑल फैशन में समझाता हूँ कि क्या कहानी. The thing is कि WHO wanted to have a common platform जहाँ पे हम पेंडेमिक रिलेटेड डिस्कशन, पेंडेमिक रिलेटेड डेटा एंड पेंडेमिक रिलेटेड रिसर्च जो है उसको क्या कर सके, अवेल करा सके. इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट एंड इंडिया चाहता है कि ये सारी चीजें जो है ये रहे. नाउ टॉकिंग अबाउट next particular important one news, and that is coming from Maharashtra. Yes. Any guess what can be a good like news from Maharashtra? Right. Another very important thing to discuss that is anti-conversion law. Yes, by bringing this particular law in the state legislative assembly, the Maharashtra government is going to solve the problem of the pollution in Mumbai, the road infra, and वो जो बीम के गिरने के कारण लोग मरे थे उसका, the surging like price of a house, rented house, and etc. etc. by bringing this bill. Right, that was the sarcasm, huh? मैं वो नहीं करूंगा. So Maharashtra government is appointing like putting a bill in the assembly that is anti-conversion bill, right? जो उनकी key provisions हैं उसमें हम बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले, if somebody, right, is forcing conversation, sorry, conversion, right? Forcible conversion जो होगा उसमें एक punishment decide की गई है. The punishment is up to the 10 years of a jail, right, up to 7 lakh rupee fine, right. उन्होंने ये बात कही कि if somebody is forcing conversion, right, to anyone on any religious ground, right, on any religious faith, then it is going to be a punishable offense, and that might end up with the 10 years of imprisonment and 7 lakh rupee fine.
Okay, so the debate that was sparking is about Article 25, right? Article 25 that is guaranteeing the right to freedom of religion. Now, my point is how they are going to decide it's a forcible conversion or not, right? We have seen in the several cases where the parents are saying different thing, the people like technically they are against that those marriages which is interfaith. So people who are getting married in an interfaith marriage, तो उनके parents कुछ और कहते हैं. The people who are getting married are saying something else. It's a clear-cut case, like a very recent case of that girl who went viral in the Mahakumbh in the Prayagraj. That was Mona Lisa. She got married to a long-term boyfriend, I guess, and he is Muslim. So she's saying that we are getting married with our own will, while the parents are saying that this is a clear-cut case of love jihad like Kerala story too. I mean, that guy has seen Kerala story. Like, that was shocking. I haven't seen that film. I think that was something to देखने लायक थी भी नहीं. Hi Bhavik, good morning. Right. तो ये चीज है. So अब जो डिबेट आ रही है दैट इज इन कमिंग अंडर द आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड देश भर में इस टाइप के एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसके बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं. डिबेट जब कल मैंने ट्विटर में इसके बारे में पढ़ा था ट्विटर में देयर वाज लाइक टू डिफरेंट पोल्स. वन पोल वाज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर बिल बट दे वर लैकिंग अ प्रॉपर लॉजिक रैशनल डेटा कि व्हाई एंड हाउ द फोर्सफुल कन्वर्जन इज गोइंग ऑन. The other party, the other poll that was like against it, they were telling just one particular point that Article 25 का violation है ये. तो ये कंटिन्यू चल रहा है. महाराष्ट्र भी अब एंटी कन्वर्जन बिल लाने में आगे आ गया है. वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर चुके हैं अपन, राइट. अब मतलब डिटेल में बात करेंगे. बिहार की जो पॉलिटिक्स है, आइए ना हमरा बिहार में, राइट, वहां से एक न्यूज निकल के आई है. सो जो करंट सीएम है विच इज नॉट गोइंग टू बी सीएम वेरी सून, दैट इज नीतीश कुमार. उनकी तरफ से एक हिंट आया है दैट सम्राट चौधरी may succeed him as the सीएम ऑफ बिहार. So, सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी से आते हैं. करंटली ही इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ द बिहार, राइट. नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है वो भरा है. सो टेक्निकली ही इज गोइंग टू बी इन राज्यसभा. द बीजेपी एंड जेडीयू अलायंस इन बिहार इज हैविंग नंबर्स. नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप हिज इलेक्शन. So he's going to be in Rajya Sabha very soon. And political transition is likely to be conducting in Bihar very soon if everything goes well within like 10-15 days. Now, I told you earlier, right, and even the experts told you earlier that the next particular CM is going to be from the Bharatiya Janata Party. 99.9% chances are there that the BJP is going to be the party whose candidate will be the CM. And it's likely to be happening, राइट. तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये आपको देखने को मिलेगी. टॉकिंग अबाउट अनदर न्यूज, है ना, दैट दिस इज एन इंस्पायरिंग न्यूज. यूएसए का इलेक्टोरल रिफॉर्म, यस, इसमें भी बात करेंगे अपन. व्हाट्स माय व्यू ऑन नीतीश कुमार मूविंग टू राज्यसभा? आई वाज अवेयर अबाउट दिस बिफोर इलेक्शन. Right. See, politics is a very different thing. The entire election of Bihar state legislative assembly was fought like on the name of Nitish Kumar. But Nitish Kumar की जो presence थी, that was not the presence that we have seen earlier. मतलब हम नीतीश कुमार को जानते हैं कि he never hesitate to talk to the journalist, talk to the people. But during the election campaign, he was just the face. He never gave an interview. He never like got to interact with the journalist and other thing. तो मुझे तो ये पहले से पता था कि there is going to be a change in the politics very soon. But itna soon that wasn't my like I had this particular view that within a year they are going to have a different CM. बट विद इन 6 मंथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था. तो बिहार इलेक्शन में जो हो रहा है ये पहले से डिसाइडेड था, राइट. देयर इज नथिंग न्यू. वो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता था. नीतीश जी बहुत सीनियर लीडर रहे हैं एंड फॉर नाउ उनकी जो एनर्जी लेवल है, जो उनका एक्सपीरियंस है,
राइट, ये दोनों स्टेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, मेरा भी ऐसा मानना है। सो अगर वो पहले ही रिजाइन कर देते, राइट, तो वो बेटर था कि वो कोई यंग कैंडिडेट जो है बिहार में आता, एंड अभी वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में वापस एंटर कर रहे हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो यूएस इलेक्टोरल रिफॉर्म, the Donald Trump has proposed a reform requiring voter to show the proof of citizenship before the voting. So अभी के time पे what exactly is happening? The way India is having like SIR, Special Intensive Revision. Similarly, the USA is planning kind of electoral reform in which they are going to like ask for a proper in like documentation, proper proof of citizenship before the election, before the voting. So this is another particular new, what we can say, magic out of that particular Pandora box from the Donald Trump. Again, इस पे भी डिबेट थी कल मीडिया में. There are people who said कि that's the propaganda, that's the agenda in Trump's what we can say election manifesto, in which he said every single immigrant he will throw out of the country. Second, people are saying कि this is just another action through which he wants the people's attention to divert from Epstein file to somewhere else, because the card he played, right, to that particular Jeffrey Epstein's file and the allegation against Donald Trump that we saw in the file, which was Iran, that actually backfired. So ईरान जो है उसका जो वो रहा क्या कहते हैं एक्शन रहा ईरान के अगेंस्ट, दैट बैकफायर्ड डोनाल्ड ट्रम्प. The popularity of Donald Trump is all-time low, and some of the media report is suggesting that this is a historic moment when a sitting president is having that kind of low popularity. Before this, no other president in the United States of America has this sort of approval rate, this sort of low approval rate at like ever. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट सच होता हुआ दिखता है कि यस ही माइट बी लाइक मेकिंग पीपल्स अटेंशन डाइवर्टिंग फ्रॉम द मेजर इश्यूज. बट्टा कर भी सकता है, राइट. ही इज नॉट एट ऑल, आई डोंट फाइंड हिम एथिकल. When he bombarded the Minab Elementary Girls School, and the, tweet, the message he put in the Truth Social yesterday, in which he says that the terrorist regime is being down and we are killing them. The language of Donald Trump, भाई किसी छपरी से कम नहीं है, राइट. यस, वो होता है ना कि आयु ना शेर में उस टाइप का पर्टिकुलर इसका लैंग्वेज हो गया है. So let's discuss this particular important topic, which is the removal of a chief election commissioner. So when the notice was served, Daksh, like during Biden, we almost forget USA exists in terms of social. Right? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल नोटिस. सो कल मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पढ़े. सम ऑफ देम पुट देयर ओपिनियन इन द ट्विटर, सम ऑफ देम टॉक्ड इन द मीडिया विद द मीडिया हाउसेस, राइट, एंड आई गॉट टू नो सेवरल डिफरेंट थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता देता हूँ व्हाट इज द न्यूज. This is a historic move again. Approximate 193 opposition MPs, right, out of which I guess 130 are from Lok Sabha, right, and 63 from Rajya Sabha. They have submitted a formal notice in both the House of Parliament, right, seeking the removal of a Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. This marks the first time in the history, ऐसा इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है. This is the first time in India's history that such notice has been formally moved against a chief election commissioner. Right? Bhavika Trump stuck like madman. That madness goes severe is and definitely देख ट्रम्प का कुछ भी हो सकता है भाई. ट्रम्प मेरे को नहीं लग रहा है कि दोबारा कभी प्रेसिडेंट बने. हिस्टोरिकली ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रेसिडेंट, जिसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया भाई, बाय अ सिंगल अनकैलकुलेटेड मूव. मतलब ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिसको ये आइडिया ही नहीं है कि उसके कारण हो क्या रहा है.
Okay, let's come back to the removal of Chief Election Commissioner. So, 190 opposition MPs, and the news says that this is from India bloc, right? We call it the opposition MPs, in which 130 from Lok Sabha and 63 from Rajya Sabha. They have submitted the formal notice to removal of Chief Election Commissioner Mr. Gyanesh Kumar, right? And this is happening for the first time in the Indian history कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए एक नोटिस फॉर्मल नोटिस जो है पार्लियामेंट के हाउसेस में दिया गया है सो व्हाट इज द डिटेल इन दैट पर्टिकुलर मोशंस उसकी बात कर लेते हैं सो नंबर ऑफ मेंबर्स तो मैंने बता ही दिया है जबकि कंफर्टेबली जो लीगल रिक्वायरमेंट है to provide such kind of issue is 100 members जो टोटल 100 मेंबर्स होने चाहिए जिनका सपोर्ट होना चाहिए एंड 50 सिग्नेचरी जो होनी चाहिए वो होने चाहिए राज्यसभा से सो 100 लोकसभा अगर मिल जाए एंड 50 राज्यसभा मेंबर्स के सिग्नेचर मिल जाए ऐसे नोटिस में तो दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट टू दैट पर्टिकुलर removal notice for the chief election commissioner. Second, जो main allegations है, there is a 10-page notice जो कल मैंने देखा था एक एक्सपर्ट है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ही है उन्होंने ये बात करी थी कि the list have 7 specific charges including the partition and discriminatory conduct, mass disenfranchisement of the voters and proven misbehavior. सो 10 पेजेस की अपने नोटिस में देर आर 7 मेजर एलिगेशंस जो लगाए गए हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज पार्टीशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर विच क्लियरली इज शोन है ना मैं वन बाय वन इस पे बात कर लेता हूँ 3-4 मैंने मेजर हाईलाइट वो किए हुए हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत दूर नहीं जाता 2024 के इलेक्शन में ही चला जाऊँ सो आवर प्राइम मिनिस्टर was talking about the mutton the mughal the muslims the mangal sutra kind of thing and this is something which is not at all welcoming from the post of sitting prime minister हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे प्रधानमंत्री की लैंग्वेज इस तरीके की होगी we expect from our Prime Minister that he will talk about what kind of development he has provided, what is his vision for next term, how the people are going to get benefited from the government policy, right, and everything. So there were opposition parties who were continuously putting a complaint against the Modi ji and other leaders who were marking the hate speech, religious discriminatory speech, and other thing. But there were no direct notice that was served to the star campaigners. But देयर वर नोटिसेस जो बीजेपी के ऑफिस पहुंचते थे नड्डा जी के पास राइट सो क्या उनका बिहेवियर पार्टीशन रहा है डिस्क्रिमिनेटरी रहा है बट ऑन द अदर हाफ अगर कोई ओपोजिशन जो एमपी है ओपोजिशन स्टार कैंपेनर इफ ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच डजंट गो विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो उनके अगेंस्ट एक डायरेक्ट नोटिस जारी होता था ये मैंने अपना पर्सनल नोटिस बता जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है जो मैंने पर्सनली नोटिस किया ड्यूरिंग द इलेक्शन राइट please no next term. Nahi Bhavi, sorry, Daksh. Most probably he's going to retire in this next term. And I was talking about 2024 election. Right? Okay. So, was he discriminatory in partition? The answer is yes. Right? The mass disenfranchisement of the voters, they are talking about the SIR. The SIR is a kind of like a process which takes time. तो अगर आप within like months, states like Bihar, Bengal, which are having huge population like UP, if you are conducting a special intensive revision just before the election, that comes under the questionable thing, right? जो former chief election commissioner थे उन्होंने भी ये बात बोली कि this is not an easy exercise to do. If we will force these exercises, the data might be corrupted, the process might be like backfired, and it is not going to be accurate. I mean, they actually gave an example of the very first voter list creation, right, in which it took 2 years to complete that voter list, but the Nielsen decided not to compromise with this. So when we didn't had like any like when we had a low population, even though it took a lot of time, but when we are having higher population, ये थोड़ा सा problematic तो दिखता है. Talking about proven misbehavior, uh, see, I'm not sure about how the diplomats behave, but I have seen people. That's what I had. Uh, I was fortunate to meet some people who were IAS, IPS level, cabinet secretary level के जो लोग होते हैं उनसे मिलने का मौका मिला, and their behavior is very polite and their behavior is a very 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 formal.
right? The point, the language they use, but the language our chief election commissioner used, है ना, पूरे देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये होगा, right? The way he said कि क्या माताओं बहनों की वोटिंग की वीडियो साझा करनी चाहिए क्या, another thing. So that doesn't look like an appropriate behavior. That is my personal opinion. Okay. So ये कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, and everything I noticed, former chief election commissioner also noticed, and they put their views on this. Social media was going crazy on this particular point. That how, and they actually started pointing out those events when he did such kind of thing. So this was the main allegation, right? The primary grievance that they said, and the opposition led by Trinamool Congress specifically, है ना, मैं तुम्हें clearly बता रहा हूँ, specifically cited that SIR of election roll in the West Bengal and Bihar, alleging it is used to delete the genuine voters to favor the ruling party. So ये पहले से भी लग रहा है ना? लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने दो तीन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. देर आर न्यूज हाउसेस वेदर दैट मेंट the via the other particular institution, they have clearly published a report that how the voter list is being manipulated, how the voter list is being changed before the election, and how the things are there. Though the opposition didn't get that kind of media coverage, but there are reports जहाँ पे ये चीजें होती हुई दिखती हैं. The election commission is not providing a proper answer. Mm. I'm not believing that election commission is a discriminatory institution or it is corrupt. It is an important institution, and it's an independent institution. So I believe there are flaws in the system which can be checked and which can be removed, but they are not even ready to do this. Born to be politician, forced to be election commissioner. I remember the election commissioner in the okay. That session was not just an election commissioner, Daksh. He was a dabang, right? He was a furious. He didn't care what the ruling party think. He clearly mentioned that I am not an election commissioner of a commissioner of a government. I'm the election commissioner of India. So if there is something which is wrong, right, I'll address it. मेरे रहते तो चीजें नहीं हो सकती वो गड़बड़, राइट, है ना. सो ये पर्टिकुलर चीजें हुई हैं. टीएन सेशन के टाइम पे एवरी कैंडिडेट वाज अफ्रेड ऑफ violating the model code of conduct. I mean, that guy, just because one particular polling booth was compromised in Bihar, I guess that was Bihar, he cancelled the election of entire constituency. So he doesn't care about it. The TN session was a very different personality. Okay, let's talk about the removal process and the framework, constitutional legal framework. क्या कहता है? So under Article 324, right, 5 of Indian Constitution, the removal of Chief Election Commissioner follows the same rigorous procedure that is of Supreme Court judge. Right. The notice are being submitted to the Speaker of Lok Sabha and the Chairman of Rajya Sabha. If the presiding officer admit the notice, three-member committee comprising of a Supreme Court judge, right, a High Court judge, right, an eminent jurist must be from the must be formed for the investigating committee to investigate the charge. So there are going to be, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद एक तीन मेंबर की कमेटी बनेगी वेयर वी आर गोइंग टू सी अ सुप्रीम कोर्ट जज, अ हाई कोर्ट जज एंड अ जूरी member who is going to investigate the charges, right? Then there is going to be voting. Yes. If mark this word very precisely, if the committee finds the chief election commissioner guilty of a proven misbehavior or incapacity, the motion must be passed by a special majority in the both houses, majority of total membership, that is two-thirds of the voting. So अगर चीजें हो भी जाती हैं, if the process is there, right, if the notice is being served and if everything goes well, तो और कमेटी भी इस चीज को मानती है, then there is going to be voting for the special majority. And when it is special majority, we are talking about the two-third of membership, and which is not at all the case. They don't have the numbers, right? Opposition numbers नहीं है, but ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक, मैंने बोला ना, दिस इज अ हिस्टोरिक व्हाट वी कैन से मोमेंट जब इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर.
फिर उसके बाद अगर ये पास होता है मोशन तो प्रेसिडेंट के पास जाके साइन होगा, प्रेसिडेंट विल इशू द फाइनल ऑर्डर। फॉर द करंट स्टेटस अगर मैं बात करूं जो मैंने ओवरऑल रखा हुआ है, सेक्रेटरीट ऑफ द बोथ हाउसेस आर करंटली एग्जामिन द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस द सबमिटेड बाय द opposition. The motion allows the opposition to register a joint protest. It is also considered unlikely to pass given the ruling alliance holds the majority. तो यस, सिंबॉलिकली दिस इज अ मूव जहां पे लोगों के सामने ये बात रखी जा रही है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, बट प्रैक्टिकली जो नंबर्स है हमारे पास वो थोड़ा सा सही नहीं है, द ऑपोजिशन डोंट हैव द नंबर्स, राइट? So that is what the removal of chief election commissioner. Now let's talk about the LPG energy crisis in India. As I told you, this is the very first time from last 14 days, that's been 2 weeks, when the government, when our prime minister actually recognized there is a problem. बल्कि उनकी इलेक्शन रैली में उन्होंने बोला भी है कि जो भी समस्या आ रही है एलपीजी से रिलेटेड वो हम मिलके सुलझा सकते हैं. द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग रिलेटेड टू एलपीजी, राइट, वी कैन टेक केयर ऑफ इट बाय टुगेदर. We have seen such kind of problem in the COVID as well. We came out of that particular problem together, so we can do this together, right? So technically अगर मैं बात करूं तो by the time of 14th March, that is today, the significant LPG supply crisis triggered by the West Asian conflict is going on in India. Ab, there are two kind of people in the social media, and again, this is going to be very critical. Just saw people getting extra cylinders. Hey, matlab, if I like booked one, you are getting two, something like this. Okay, सो क्या चीजें हो रही हैं अगर मैं करंट इम्पैक्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो कमर्शियल सेक्टर है, राइट, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. यस, कमर्शियल सेक्टर इज एक्चुअली हिट हार्डेस्ट, right, because of one reason. Domestic supply is considered as the essential under the essential commodity act, right? Yes, so commercial sector में majorly अगर मैं बात करूं तो इनको नॉन essential सेक्टर्स में रखा गया, नॉन essential commodity में रखा गया. पीपल आर होर्डिंग. अच्छा, वो तो करेंगे ही यार, जब ऐसी न्यूज आएगी तो करना ही पड़ेगा लोगों को. सो है, मतलब लोग भी थोड़े से पागल हैं, भाविक है, ठीक है. लेट्स फोकस ऑन दिस. सो द कमर्शियल सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द नॉन इसेंशियल सप्लाई, नॉन इसेंशियल कमर्शियल एंटिटीज. सो उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं, या राइट, जो होटल्स हैं, राइट, ये सारी चीजें जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई हैं. एंड देर आर रिपोर्ट्स, मैं कल भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया में देख रहा था where the hotels have decreased their menu to that particular level की जहाँ पे मिनिमम गैस हो. इवन लाइक फ्रॉम लास्ट 2 days, जो हमारे दोस्तों का अड्डा है, right, where we sit in the evening after our classes, after our jobs, and we used to discuss about the things of the daily life. We can see the crisis over there. I mean, the place where we people actually sip teas, right? That person was making tea on induction rather than on the gas. So crisis may be like there. The government doesn't want us to know this. Thanks to our media channels, they still don't want to talk about it. But some of the media channels started talking about it. Yes, there is a crisis. Our prime minister accepted it. That means that this is the starting, right? नाउ हाउसहोल्ड सप्लाई जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ डेटा निकाला है. हाउसहोल्ड सप्लाई में देर आर 33 करोड़ डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स, है ना, जो गैस यूज करते हैं, राइट. व्हाई द लॉन्ग लाइन, दो आई डोंट अंडरस्टैंड सर. Everybody said they have stocks. If you are believing on like politicians' word, Daksh, you still need to grow up. There are 33 crore household supply, like what we can say connection, which is directly under the Essential Commodity Act. तो ये कहीं ना कहीं इन सब पे सिलेंडर पहुंचाना इंडिया की प्रायोरिटी है, इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. दैट इज बीइंग सेड इन द पार्लियामेंट एज वेल, दैट इज बीइंग सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, राइट.
The many areas are reporting the delays of approximate 7 days to the supply to the delivery due to a panic booking. राइट, दिस इज फ्रॉम न्यूज आर्टिकल जो कह रहे हैं पैनिक बुकिंग के कारण जो डिलेज है वो 7 डेज के हो चुके हैं. द प्राइस इज ऑलरेडी लाइक रिजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बुकिंग रूल्स. Yes, the booking rules, which was saying ki first you can book a cylinder within 21 days, another cylinder within 21 days. It's being increased to 25 days. Right now, it's being increased to 45 days. So this is one of the particular sign जो आपको देखने को जो like which actually is telling you that there is a crisis. Then why, like if there is no crisis, why we need to take like 1.5 months to book another cylinder? If we are talking about a family of four people who are living at any place, then a cylinder, like one cylinder, 14.2 kilogram, the domestic cylinder, it only 30 days, 1 month to like finish off. बट 45 डेज के लिए वो जो 15 डेज का टाइम है उसको हम कैसे वो करेंगे. देर आर सर्कुलर्स, देर आर वीडियोस, देर आर एड्स कि हमें गैस कैसे बचाना है. बट वो चीज तो हो रही है. खैर, टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, तो सबसे पहले मैंने कल भी बताया था द प्लांट्स हैव बीन टोल्ड टू वर्क ऑन 100% कैपेसिटी एंड टू प्रोड्यूस 25 to 30% मोर गैस. राइट, नई बुकिंग रूल की हमने बात कर ली है. डाइवर्सिफिकेशन पे इंडिया काम कर रही है, ये एक एग्जैक्ट न्यूज है जो बाहर से भी आई है. इंडिया इज टॉकिंग टू यूनाइटेड स्टेट, रशिया, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया टू to supply the gas to India to reduce the dependency on the Gulf. और इससे एक नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि द गैस प्राइस माइट राइज. टॉकिंग अबाउट इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो घर घर में सिलेंडर वो कर रहे हैं, होर्ड कर रहे हैं, द पीपल हु आर ब्लैक मार्केटिंग इट, दे आर सेलिंग इट टू 2,000 to 5,000 रुपीज, उन सब के अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू हो चुका है. दी अल्टरनेट फ्यूल्स जो है उस पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है ना. सो जो गाड़ियों के लिए सीएनजी वगैरह होती है वो भी पर्टिकुलर चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है. जो पाइप नेचुरल गैस है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है. सो द गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग टू गो फॉर द अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक कोल, बायोमास, केरोसिन. सो भैया कुल मिला के हम वापस जा रहे हैं लगता है. ये चाचा ट्रम्प, ये सड़ा हुआ संतरा, बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर गोइंग बैक टू स्टोन एज, मिडाइवल एजेस, जब हम कोयले पे रख के खाना बनाएंगे. खैर, जो लाइक अल्टरनेटिव फ्यूल है, दे आर गोइंग टू हार्म द एनवायरमेंट वेरी ड्रास्टिकली. राइट. यस, अगर मैं कोल पे चला जाऊं या कोक पे चला जाऊं या केरोसिन पे चला जाऊं, दे आर गोइंग टू हार्म एनवायरमेंट सिग्निफिकेंटली. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, दिस इज वेरी लाइक अनदर प्रॉब्लम जो यहाँ से राइज होगी. अनदर न्यूज दैट इज शॉपिंग ट्रेंड. यस, जो इंडक्शंस है, right, the inductions started like the demand of inductions in different quick commerce and e-commerce platform has risen to 300%. So पहले जो एक महीने में 10 सिलेंडर 10 इंडक्शन बिकते थे, now they are being like 400. They have increased by the 300%, so that means that is going to be the fourfold. So that is how the things are. Right. So यहाँ पे जो LPG crisis है, that is evident. For us, for now, we understand that the government has recognized the problem. The government's recognition is something which is going to help us solving the problem. So whether that is diversification, whether that is changing the booking rules, whether that is other steps they are taking, like the stability fund that they have provided, right? So they are trying, that's for sure, right? Let's hope for the best. How much of tenure remaining to the Trump? Being 17, what am I doing here? You are reading the news with us. Now, let's talk about the most important conflict, most important reason why we are discussing these news. That is Western Asian conflict. कहाँ तक पहुंचा है ना. सो अगर मैं ओवरऑल लेटेस्ट मिलिट्री डेवलपमेंट की बात करूं, अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, बट होना तो चाहिए. राइट. सो सबसे पहले यूएस ने
ऑयल हब्स पे अटैक करने की बात की है. So the President Trump confirmed that the US forced all obliterated the military targets on the Kharg Island, Iran's primarily oil export terminal. He warned that the island's oil infrastructure could be targeted next. तो यूएस ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट जो है वो किया है एंड दे आर गोइंग दे सेड दैट दिस इज जस्ट अ टर्मिनल व्हिच वी डिस्ट्रॉयड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एंटायर ऑयल फैसिलिटी इफ यू आर नॉट स्टॉपिंग एंड ईरान का उसमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है टू ships were allowed by Iran as said by the ambassador but I didn't get any news that any ship was allowed by Iran राइट है ना सो मुझे ये न्यूज नहीं मिली इवन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके ट्विटर हैंडल पे भी ऐसा कुछ नहीं था सो आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें कहाँ से मिल रही है लाइक लास्ट 11-12 बजे तक तो ऐसा कुछ नहीं था सो लेट्स सी अब जो रीजनल एस्केलेशन है उसमें जो बगदाद है इराक में भी अटैक जो है बाय दी हिजबुल्लाह बगदाद की एक बिल्डिंग में अटैक देखने को मिलता है सो द कॉन्फ्लिक्ट हैज रीच्ड टू द इराक राइट the casualty in Lebanon is getting higher and higher and higher right and इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज यार मैंने अभी बीबीसी रेफर किया था ऐसी तो कोई न्यूज नहीं थी यार I don't know. We'll discuss if this is happening. This is a good news. And if you are talking about that ship, Hannah, which went on the dark mode and then it passed from the Strait of Hormuz and reached to India, है ना गुजराती कोस्ट में अगर वो आया है और वो डार्क मोड में चल के आया है राइट दैट्स वी विल डिस्कस दैट एज वेल रुक जाओ थोड़ा सा है ना सो कैजुअलिटीज आर इंक्रीजिंग लेबनान में स्ट्राइक्स के कारण बहुत ज्यादा वो हो रही है वॉच कोलियापा सदर्न लेबनान में 12 मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं पर्सनल जो हैं उनकी डेथ हुई है यूएस ट्रूप डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है द यूएस हैज ऑर्डर्ड 2500 marines and an amphibious assault ship to the region following nearly 2 weeks of direct conflict with the Iran. So if they are planning for ground level invasion, this is going to be a problem. Uh, Netanyahu claimed that the top nuclear scientists जो है उनको भी मारा है सो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी भी डेथ की न्यूज इसराइल दे रहा है बट वी आर नॉट कंफर्मिंग इट इंडिया के ऊपर क्या क्राइसिस चल रहा है इसका क्या इफेक्ट आया उसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं राइट इंडियन नेशनल्स आर आल्सो एट द रिस्क देयर आर 2 इंडियंस जिनकी डेथ हुई है देयर आर लाइक सेवरल इंडियंस जो कहीं ना कहीं पे अटैक के कारण इंजर्ड भी हुए हैं एंड दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब बात करते हैं कि जो चल रहा है ये तो कंटिन्यू चल रहा है अब बात करते हैं द सॉल्यूशंस पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट Yes, diplomatic solution that started talking about. First thing is the medium of BRICS. Currently, India hold the chair of the BRICS, right? And जो Iranian है, Iranian जो वो है foreign minister है, he has clearly mentioned that we have talked about it to the India, and even our prime minister talked about it. Our foreign minister also tweeted about it. So yes, BRICS can be a proper solution. India can facilitate a discussion among the BRICS nation to evolve a common approach to solve the US-Iran conflict. That is what they want. And that is what we want. We want to end this particular conflict क्योंकि ये हमें बहुत परेशान कर रहा है. Right? The another one is direct communication from the Indian side. Now we can see the direct communication between India and Iran. अगर मैं बात करूं कल के उसकी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर have had multiple calls with the Iranian counterpart to dialogue to ensure the safety of Indian citizens. यहाँ पे कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं. Prime Minister Modi has talked to Iran after 13 days. So he put a tweet on his wall that yes, we talked to the Iranian counterpart. But Iranian president की तरफ से ऐसा कोई tweet नहीं आया. Though Iranian president had put tweets about Pakistan's counterpart talking to him, the Russian counterpart, but not for the Indian counterpart. तो कहीं ना कहीं ईरान जो है अपनी नाराजगी अपना गुस्सा दिखा रहा है कि सर when we needed you you did not stand with us you were with the Americans so एक गुस्सा है
But Iran would not like to lose an ally, a market like India. So definitely we are going to get a proper solution, right? So that is what these are the important news of today's newspaper. चलो सो एक बार सारी की सारी न्यूज जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो सेंटर गेट्स aid of 57,381 crore for the global economic shock. Six US personnel killed in a refueling plane crash in Iraq. America is calling it a crash, right, by the mistake, while the Iranians are saying कि हमने उसको गिरा दिया है. Come, plans for the SIR type voter proof review. And Parliament में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट नोटिस आ चुका है. एलपीजी कैरियर क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रैक्स. नाउ लेट्स डिस्कस दिस, है ना. A Shivalik, an Indian flagged LPG carrier with a cargo to capacity of 54,000 ton, crossed the Strait of Hormuz on the Friday, according to the marinetraffic.com, an online portal track merchant ships. As per the website, the ship has departed on the 7th of March, was originally destined to the US. Right, Daksh, are you getting it? Right. The Indian Navy has denied a report that Shivalik is being guided by the naval vessels. The LPG carrier is owned by the Shipping Corporation of India, and the cargo it get was sufficient for the 1 day, है ना. और इसके लिए ये बोला जा रहा है कि दिस इज समथिंग जो कि डार्क मोड में चला गया था, है ना. यस. एंड मतलब द थिंग इज कि डार्क मोड का मतलब ये है कि दे हैव जो ट्रांसपॉन्डर था उससे देयर वाज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन. So for now, we still need to get that particular confirmation that it is being passed. It's passed the Strait of Hormuz authentically by authorization, by allowance, like by Iran allowed it or not, or they are just getting it here by like some method, right? So ये एक particular अभी question है दक्ष, है ना. We'll discuss about it. Moving on to the next important news. Nitish Kumar and CM Samrat Chaudhary will be the next CM. We have already discussed about it, so we're not going to discuss much. Right? Uh, एलपीजी कैरियर क्रॉस स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ट्रैकिंग डेटा. अगेन जो ये पर्टिकुलर चीजें हो रही हैं इसमें ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि अभी तक वी डोंट हैव कंफर्म न्यूज की वेदर दैट दे वी गॉट इट फ्रॉम द प्रॉपर मेथड, राइट, और वी आर लाइक getting it with certain what we can say uh, other ways. For example, अगर हम बात करें so, reports have described that the perilous journey under the took the cross the strait region where GPS spoofing and jamming were commonly deployed with the war tools. Right, such measures can confuse the ships by giving the false location. The ship had like apparently goes into the digital darkness and use the manual navigation to the safety cross of the strait. So, Daksh, yes, there are ships that's got that cross the strait, but still there is no confirm data कि ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू हुआ है नहीं हुआ है इंडिया और ईरान के बीच में. ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ये डायरेक्टली इस तरीके की द प्रोपोगेंडा विल बी देयर कि भैया हो गया हो गया हो गया, बट दैट इज नॉट समथिंग जो है. एलपीजी इंपोर्ट्स एन इशू फॉर स्लाइट कंसर्ट बट नो ड्राई आउट्स रिपोर्टेड से सेंटर. सेंटर मान तो रही है बट ऐसा नहीं है. Lok Sabha was disrupted and opposition members protested over LPG issue, right? बट क्या कर सकते हैं, है ना. दे कैन प्रोटेस्ट बट जब तक मोदी जी पार्लियामेंट में आके आंसर नहीं करेंगे तब तक क्या ही होगा. Iran calls BRICS to play positive role in the global security. As we told you, the BRICS is chaired by India this particular year, and India can play a very good, what we can say, role to get the global security under their control. Right. Huh. So, Congress asked why PM is hesitant to condemn the assassination of Iran's Ayatollah Ali Khomeini. Right? ये क्वेश्चन सर हम भी पूछ रहे हैं कि इट्स बीइंग 14 डेज. मैंने जैसा तुम्हें बोला ना कि 14 डेज हो चुके हैं इस वॉर को, एंड इट टुक 13 डेज टू आवर प्राइम मिनिस्टर, राइट, टू टॉक.
to the Iranian counterpart. तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. I prefer Indian Express, the Hindu, because it is least biased. मुझे ये लगता है. It is also biased toward the left, but least biased. In any area, only Indian Express is available, so it's good. Ram, Indian Express is a good newspaper, yeah, right? But if you cannot get the access of a physical copy of any newspaper like the Hindu or something. You can get the subscription. Like मैं भी subscription से ही पढ़ रहा हूँ ना. ठीक है? Right. So yes, we are also discussing same thing why PM is not like what we can say condemning the assassination of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khomeini. It would be a big step and help build the goodwill for the BRICS. Definitely. मतलब देखो ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ but yesterday I saw a tweet in the like X that this is a chance when Modi ji can actually get a Nobel Prize if he can mediate the global peace, right? Because the oil supply disruption is causing losses to all over the world. It's not just India, right? Middle Eastern countries are at the verge of war. US में losses हो रहे हैं, Western sorry European nation में loss हो रहे हैं, अफ्रीका में जा रहा होगा, कई जगहों पे. So India can get actually become a very uh, firm mediator. But क्या कर सकते हैं मैं तो paid menstrual leave may hurt women career says Supreme Court. I mean, this is the same Supreme Court which was actually which says the menstrual hygiene is a fundamental right. That is few days back, and they are saying कि paid menstrual leave may hurt women's career. That is today, right? Maharashtra government tables the controversial anti-conversion bill. इस पे अपन बात कर चुके हैं, so we are not going to discuss much about it, right? ये एडिटोरियल पढ़ लेना. These are the good editorial अगर तुम्हें पढ़ने का मन है. एक और अच्छा था यार. Wait. गैस शॉर्टेज चॉकिंग द जिंदल स्टेनलेस यूनिट. अगेन कमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी कमी आपको बता चुके हैं, सो प्रॉब्लम नहीं है. द रुपी सेटल न्यू रिकॉर्ड लो एट 92.3 अगेंस्ट डॉलर. यानी क्या बोला, एक टाइम पे 92.42 पहुंच गया था भाई, राइट? क्या कर सकते हैं, फिर वो रिकवर हुआ है थोड़ा सा. US launches fresh probe into India, 15 other countries for the forced labor. So, Chacha Trump, first of all, you wanted to do trade deal with us, फिर तुमने trade deal को वो किया, फिर तुम हमारे against लोग वो कर रहे हो. कुल मिला के, I believe the Trump's mind is out of place. Iranian drones killed the French soldier in the Iraq's autonomous Kurdistan region. राइट. सो भैया अब यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही हैं. अफगानिस्तान accused Pakistan for targeting the homes in the airstrike. UK Defense Minister says Putin hidden hand is behind the Iran tactics. Oh, you got to know about it very soon. हमें तो ये पहले से ही पता है कि ईरान को इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का काम जो है वो रशिया ही कर रहा है. Iran's new supreme leader is hurt and likely disfigured, says Peter Hegseth. ये पीट हेक्सवेथ वही है जो वॉर सेक्रेटरी है, who was not even aware about the attack on the Iranian girls' school, and they are calling themselves as the AI genius and one of the most powerful defenses. Right? So he's saying कि नया supreme leader जो है वो hurt है and disfigured है and he don't know this. ईरान में इसराइल जो है कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है. यूएस कैन वीवर टू द अदर नेशन टू बाय द रशियन ऑयल. So yes, not only India but other nations also get the weaver to buy oil from Russia, seeing the global economic impact of Iran, Israel and US war. तो उसने अदर कंट्रीज को भी अलाउ किया है कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हो. ये वाला पढ़ लेना, ये मैंने बोला था ना एक एडिटोरियल बहुत अच्छा है. सो एमिड वॉर यूएस प्रेसिडेंट पुशेस फॉर द एसआईआर टाइप ऑफ इलेक्टोरल ओवरहॉल. सो मैंने बोला ना कल बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा था कि अब ईरान वॉर वाज नॉट सफिशिएंट टू हाइड द सिंस ऑफ the American President Donald Trump in that is being mentioned in the Jeffrey Epstein's file. So he started a new kind of practice, right? ये
ये जो मोहम्मद मरंदी हैं, इनका एक बहुत प्रॉपर एडिटोरियल आया है ना, इंटरव्यू आया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन, है ना। अपन वी हैव डिस्कस अबाउट इट दैट हाउ जो यूएस एंड इजराइल थॉट इट्स वेनेजुएला एंड इट कैन हैव अ क्विक विन and the regime change can happen, but nothing like this happened, and it is backfiring. How it is backfiring to us we also discussed, but यहाँ पे yeah, they are, he is going to explain you very well, right? So read this one very firmly. Super majority of RSP leaves Nepal's parliament with the weakest opposition. So this is the very first time when Nepal is having one of the most weakest opposition. क्योंकि आरएसपी का जो पर्टिकुलर विन है, जो आरएसपी का लीड है, दैट इज ह्यूज, राइट? सो दिस इज इट फॉर द न्यूज। एंड यस, आज भी क्वेश्चन नहीं है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द हेल्थ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी चीजें ठीक हो जाए, है ना। सो वी आर गोइंग टू गेट थिंग्स ऑन टाइम। And this was the newspaper analysis for today. All right. Make sure to read it properly. Make sure to make notes properly. And Monday से थोड़ा सा और regular हो जाएगा. Tomorrow Sunday I'll get rest. So most probably Monday से I'll be better and we'll do tons of more questions. So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. All right. Make sure to like it, subscribe it, and share it. क्या कह रहे हो? Daksh, yes, I saw that. I told you ना, मैं थोड़ा सा health wise भी compromised हूँ, वो काम भी बहुत ज्यादा है, right? But I'll answer it today or tomorrow. Don't worry. ठीक है? Thank you, Bhavik. So I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करो and life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See you guys. Good day.